Hi guys and gals and assalamu alaikum to all the lovely people who are watching me right now. पहली बार है कि मैं अपने चैनल के ऊपर बर्थडे सीरीज कर रही हूँ and this makes me feel special, excited और थोड़ी सी nervous भी हूँ मैं. अभी बहुत मज़ेदार वीडियोस आने वाली हैं and you don't want to miss them. So subscribe to my channel, hit that notification bell as well और मुझे Facebook और Instagram पे भी follow कर लीजिए. आज की जो वीडियो है that is my Dubai haul video. Now let's begin with the haul. Let's go. So I'm going to start with IKEA. वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं. मैंने ब्लॉग भी इसका बनाया था. You can see the blog over here. वहाँ से मैंने बहुत बेसिक से जो होते हैं ना ये कर्टन्स लिए थे. These are sheer curtains. ये बिल्कुल sheer है इस तरह से. Like this is how they are literally. Can you see me? तो इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है ना sheer है and बहुत बेसिक से. तो आपको एक पैकेट में 2 मिलते हैं. So I got 2 packets of this. And I am very happy and excited. So this is heavy first of all, but ये मुझे बहुत help करने वाला है मेरी फिल्मिंग के अंदर because majority time क्या होता है हमें काफ़ी shoots करनी होती हैं and clutter बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो मैंने सोचा कि मैं एक storage box ले लेती हूँ. This is how it looks. It's huge you guys. ये पूरी screen cover कर लेता है. इसका print बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है ये. Next you guys, I got this and ये बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है तो मैं इसको निकाल देती हूँ. ये बहुत मज़े की चीज़ है. यहाँ पर आप अपना फ़ोन भी रख सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी कुकिंग बुक रख सकते हैं एंड ओवर हियर यू कैन हैंग योर हेडफोन्स और एनी काइंड ऑफ केबल. मैं सिर्फ इसलिए ये लिया क्योंकि मुझे है कि मैं फिर से गानों को सुनना शुरू करूँ बिकॉज आई जस्ट स्टॉप्ड लिसनिंग टू म्यूज़िक के बगैर ज़िंदगी को इमेजिन भी नहीं कर सकती थी. सो आई वॉज नॉट प्लानिंग टू बाय देम बिकॉज दे आर वेरी टाइनी. So my sister was like कि तुम कुछ भी नहीं खरीद रही हो, these are so cute, तुम ये जो है अपनी बास्केट के अंदर डालो. बहुत सोचने के बाद एंड बैक एंड फोर्थ जाने के बाद I was like actually my sister is right, मुझे ले लेने चाहिए. So yeah, I got these and these are very pretty. इतनी मिट्टी आई हुई है, पहले इसको मिट्टी को साफ करूँ मैं. Yeah, life is good now. It is this. It's actually a rainbow, but it's plain white rainbow, you guys. और ये होल्डर है, बुक्स के लिए आप कर सकते हैं. I was like, I cannot leave this. मुझे ये लेकर जाना है. तो अब मेरे हाथ में जो चीज़ आएगी वो I will show you guys and tell के वो मैंने कहाँ से ली है या अम्मी ने कहाँ से ली है. बिकॉज इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अम्मी ने ली हैं. Those were for me. That's why I'm showing you guys. ये इन्होंने होम सेंटर से लिया था. It has a very beautiful design on it because ये थोड़ा सा rustic सा है. ये बहुत ही प्यारा प्रिंट है एंड आई थिंक ये आपके छोटे टेबल के ऊपर पूरा लग जाएगा. दिस इज माई टेस्ट, दैट इज अम्मी जान's टेस्ट. सो आई लाइक कॉपर एंड ये कॉपर बहुत प्यारा है एंड इसकी जो डिज़ाइन है ना, आपने अगर कभी इस्लामिक आर्ट को जाकर देखा हो उसके अंदर एग्जैक्टली यही डिज़ाइन आपको मिलेगा. इट्स वेरी पीसफुल. आई जस्ट फाइंड इट वेरी इंट्रिकेट एंड पीसफुल. I don't know मैं इसे कब यूज़ करूँगी but I'm very happy that I got this. I have 2 things कि जो मैंने अम्मी को दिखाई थी. So she bought these things. This is a napkin holder और ये यहाँ पर बहुत महंगे होते हैं but वहाँ पर बहुत ही affordable था ये. तो मैंने क्या किया था कि मैंने ऑनलाइन जाकर देख लिया था इनके होम सेक्शन में जो भी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी वो मैंने उनकी तस्वीरें खींच ली थी. एंड देन व्हेन आई वेंट इन द स्टोर्स आई शोड द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर दिस एंड दे लिटरली हेल्प मी. सो दिस इज अ टिप, यू कैन डू द सेम थिंग. दीज आर द 2 टिप थिंग्स जो कि हमने ली थी. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. इसका जो कलर है वो एक वाइब है. इट्स अ वेरी पीसफुल टोन. So yes, we got 2 of these. I got these. These are not your ordinary pair of slippers or shoes. इसके नीचे सोल है and ये मुझे Carrefour के अंदर मिले थे. I haven't seen these over here. तो मैंने ये specifically अब्बू के लिए लिए थे because अब्बू needs it. I was like अब्बू whenever you do the creaming you need to wear them. Okay, so दुबई जाते ही I was like I need some storage. You always need storage even if you have plenty of storage. So I found this in Daiso. इसके अंदर पॉटपुरी भी लोग रखते हैं, ज़्यादातर आपको वो ही देखने को मिलेगा. So this opens like this and इसके अंदर एक और भी है. So yeah, these are 2 boxes. ये बहुत ही आसानी से ना बंद भी हो जाता है and I found it very sleek actually. ऐसा खुला ऐसे बंद हो गया. ये मैंने अभी तक खोला नहीं है. ओह
Okay, let's open this one. Oh my god, this is so cute. Again, ये भी खुलता है. Wait, yeah, ये इधर से खुलेगा. It's very cute. So yeah, ये भी होम सेंटर का है. It's a brush holder. You can see over here. आपको दिखाई दे सकता है यहाँ पे. So यहाँ पर आप brushes रख सकते हैं and ये different sizes यहाँ पर given है. तो यहाँ पे छोटे हैं, उससे बड़े पे सबसे बड़े, you know. अगर आप लोग मुझे थोड़े टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मुझे अगरबत्ती, फ्रेग्रेंस, होम सेंस एंड ऊद बहुत ज़्यादा पसंद है. मुझे बखूर बहुत ज़्यादा पसंद है, you know. Things like these, I just love them. So this one is Garden Bliss Essential Oil in Gold Shimmer. It reminds me of somebody जो कि shower, you know, hot shower लेके निकला हो और उसने floral scent के products इस्तेमाल किए हों. Next one is also very special. This one is Peony and Blush Suede. This is a fragrance oil, so this is not essential oil, it's fragrance and oh my god, it's intense you guys. So ये इस तरह से खुलती है and इसका ना dropper होता है यहाँ पर. This one, oh my god, is such a beautiful scent you guys. I would say इसका scent थोड़ा सा clean है, sweet है. It's definitely a nighttime scent. I can see somebody who's going in a wedding smelling like this, subtle, but it's a lingering scent. I also got an aroma oil from Daiso and this is in the variant sweet orange. ये मैंने specially अम्मी के लिए लिया था because यहाँ पर orange variant के अंदर मिल जाते हैं sweet orange, जिसको उनका अम्मा को पसंद है ना, वो नहीं मिलता यहाँ पर. तो इसकी जो smell है या fragrance है वो बिल्कुल जिस तरह से अगर आप कीनू के बाग के अंदर चले जाएंगे ना वैसी आती है इसके अंदर. Moving on you guys, this is something that अम्मा जान got for me और ये भी उन्हें Daiso पे दिखा था. I don't know when I will wear it because it's not my style. Still, we're going to wear it because Anna Chan got it. Daiso से ये मेरी best purchase थी. So this is a huge scrunchie. I think so it is organza, but a very good organza cloth this is. The only thing that I got from Splash was this. And ये इनका neck piece है and this one costed me 19 dirhams, which I think यहाँ पर आपको शायद इससे सस्ता मिल जाएगा, but I was there and मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी तो I was like चलो नूर buy कर लेते हैं. I got some jewelry pieces from some shops. तो ये first है, ये Claire's से मैंने ली थी and this is, you know, one pair of ring. So this is how it looks and you can wear it like this or you can also wear it like a plain band. I got this and मुझे ना ये बहुत पसंद है. You can add this in your necklace और ये बहुत meaningful है like, और एक ऐसा word है जो कि मुझे लगता है बहुत importance रखता है मेरी life के अंदर. आपकी लाइफ में कभी भी नुक्ता या फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए. यू नो, यू शुड ऑलवेज हैव दैट और. सो अगर आप किसी से बात भी कर रहे होते हैं तब भी आई थिंक कि और एक ऐसा वर्ड है जो कि कन्वर्सेशन को चलाता रहता है. एज अ मुस्लिम वी कैन नॉट गेट टैटूज एंड ऑल, सो आई वाज लाइक at least I can get a pendant kind of thing. So this is what I got. I got this ring. Actually ये मुझे मिली थी. There is a place by the name Brands for Less. ये वहाँ से मुझे मिली थी. This is the ring that I got from there. It's very dainty and it's very pretty. और मेरे हाथ पे अच्छी लगी थी तो मैंने कहा I need to buy it. When I saw this, I was like, I need to buy it. So this is in cubic zircons, cubic zirconia or cubic zircons. So these are two sets of rings. ये बहुत प्यारी हैं. And this is in blue, and blue is my favorite color. So this is how this one looks. This is the most luxe crunchy ever that I have felt. ये velvety सा इसका texture है, इसका जो shade है वो neon सा है, and ये 5 dirhams का था. I was like, oh my god. So this is how it looks. So I also got a perfume for myself and actually मैं चाही थी कि मैं लताफ़ा brand के कुछ perfumes खरीदूँ, but I couldn't find लताफ़ा in Mall of Emirates. For now you guys, I found this and इसके reviews इतने अच्छे नहीं हैं इधर, but this is a very good perfume. This opens up like this and ये पूरा एक box है
एंड अंदर से इसका एक और बॉक्स था जो कि मैंने निकाल दिया था. I love the color of the juice to begin with. It smells like a wedding ceremony actually. जिस तरह से हमारी शादी ब्याहों के अंदर आप जाते हैं, घुसते साथ जो एक फूलों की खुशबू आपको आती है, it smells just like that. Some white floral that I can smell in it. So इसके जो notes हैं ना, this one has bergamot in it. So yeah, that is what I smell in it. It has orange, mandarin, black currant, apple. That are the top notes. And the middle notes are rose, orange blossom, jasmine. Yes, this is, I think so, I smell jasmine a lot in it. And this has patchouli leaves. Now in the base note, when it dry downs, it has solar notes and sandalwood, vanilla, pods and musk. Okay, I don't smell any vanilla in it, to be very honest. Vanilla pods, I'm not sure. I'm not sure about the vanilla over here. The longevity on this depends completely on you. I will be honest, like how much do you spray, and I will say on me personally it does last really 5 hours tak last kar jata. It was damn cheap. It was very reasonably priced. I think I paid 26 dirhams for this one, and I can't believe कि इतना सस्ता कोई perfume आ भी सकता है. I was like, seriously? And these are the souvenirs that I got from Dubai. तो मैंने वहाँ से ये shells ली थी. So this one is in yellow and orange shade. बहुत ही pretty dim सा pink blush color है. And I also got this one. ये बहुत ही प्यारी unique सी. I'll show you guys a close up of this. And then I found this one. This one again has orange shade to it. So it's something very precious, and no souvenir comes close to this, I feel. So I was like, मुझे यही बस जो है ना souvenir लेकर जाना है. So that was the haul, you guys. I hope you all enjoyed it as much as I enjoyed showing you guys. I know थोड़ी सी लंबी video थी, but it was worth it. So you guys, see you all in my next video. Take care of yourself. God bless you all, and Rubrakan guys and gals. Bye.